नया चैप्टर हमारा है मास वेट एंड डेंसिटी। एक आसान चैप्टर, मार्क्स गेनिंग चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, दैट इज मास। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, आपने जो मास की जो डेफिनेशन लिखनी है, आई एम राइटिंग द सेम, you have to follow this. So what is mass? It is amount of matter in an object at rest. Amount of matter in an object at rest relative to an observer. किसी ऑब्जर्वर के रेफरेंस से एक ऑब्जेक्ट, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, में जो मैटर होगा, दैट इज कॉल्ड मास। सो दो नहीं चेंजिंग के ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट एंड इट शुड बी विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, तो मास की वैल्यू में चेंज। ओके, यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। ओके जी, सो मास क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज किलोग्राम, और इन शॉर्ट के जी। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? वेट की। लेकिन वेट की बात करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या है? नंबर 1 हमने डिस्कस करना है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है भाई? देखिए, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज दिस इज अवर अर्थ और एनी अदर ऑब्जेक्ट, mass. According to the law of gravity by the Newton, it says that every two masses attract each other. ठीक है। अब कोई बॉडी जो है वो किसी दूसरे मास को कहाँ तक, कितनी दूर से अट्रैक्ट कर सकती है, ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर एक बॉडी बहुत ज़्यादा दूर से अट्रैक्ट कर सकती है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, और अगर नहीं कर सकती तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाएगी। सो किसी भी बॉडी के आसपास का वो सारा रीजन, जहां जहां तक वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को, किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकती है, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। ओके, सो डेफिनेशन क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की? इट इज द रीजन अराउंड अ mass where another mass may experience the force of attraction। तो किसी मास के चारों तरफ का वो रीजन जहां कोई दूसरा मास उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, वो उसकी फोर्स ऑफ, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद एक और क्वांटिटी जब जिसकी बात करते हैं, दैट आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। व्हाट आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस? ये क्या होती है भाई? देखिए, वी नो दैट द फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, और सारी वेक्टर क्वांटिटीज की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की क्या है, वो भी एक वेक्टर है, तो उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये इनविजिबल लाइन होती हैं जो किसी भी मास के अराउंड होती हैं। लेट्स सपोज के ये एक मास है, इसके अराउंड सारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की लाइन होगी। अच्छा, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी में एक खास बात क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी में सिर्फ अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन नहीं होती, क्योंकि हर मास दूसरे मास को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, देयर इज नो वे ऑफ रिपल्शन। तो इसका मतलब है कि वो हर जो बॉडी है वो दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के जो एरो होंगे वो हमेशा किस तरफ होंगे, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, दिस वे। Gravity only attract, so that is why all the arrows are towards the center of the mass, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन होती है। सो हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दीज आर इनविजिबल लाइन around a mass that indicate the direction of gravitational force acting on a body। ठीक है, सो ये एरो हमेशा इनवर्ड होंगे क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है कि इसी डायग्राम को ज़रा हम कंसीडर करें। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1, 2, 3। अगर आप देखें, अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2, पॉइंट 3 की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में जो गैप है वो ज़्यादा होता जा रहा है। आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन को देखें और इसको देखें, इन दोनों में गैप ज़्यादा होता जा रहा है। तो याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कोई भी फील्ड लाइंस हो, अगर उनमें गैप ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि फील्ड वीक होती जा रही है। एंड इफ द फील्ड लाइंस आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो इस डायग्राम को देखें तो आपको पता चलता है कि अगर आप मास से दूर जाएं, दिस इज द ग्रीन वन इज मास से दूर जा रहे हैं तो लाइन की स्पेसिस ज्यादा हो रही है। दैट शोज कि जैसे जैसे आप मास से दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती है, एंड व्हेन यू कम टूवर्ड्स द मास द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। सो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल field strength। Gravitational field strength, what is gravitational field strength? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल क्या होता है हमारे पास, स्मॉल लेटर जी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज द अमाउंट of force acting on a unit mass at a point in gravitational field। So बहुत सिंपल वर्ड पे, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब जैसे 1 किलोग्राम हो गया या 1 ग्राम हो गया,
तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पे 1 किलोग्राम पे जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो उस पॉइंट की, रिपीट कर रहा हूं, वो उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है. लुक एट दिस डायग्राम अगेन. नंबर 1 पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी, 2 पे डिफरेंट कम होगी, 3 पे और कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी. ठीक है, हर पॉइंट पे जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट के लिहाज से होती है. ठीक है, सबसे जो स्ट्रांग होगी वो मास की सरफेस पे होगी, याद रखिएगा. जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां पे होती है? जमीन की सरफेस पे होती है. ओके, सो फॉर अर्थ the value of g means gravitational field strength is maximum at surface of the earth, yeah, at sea surface. And that is g is equal to 9.8 न्यूटन पर kg. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जमीन की सरफेस पे 1 किलोग्राम के ऊपर कितनी फोर्स लगती है? 9.8 न्यूटन लगती है. ओके, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट मैसेस की जी की वैल्यू डिफरेंट होगी. जैसे मून के लिए जी की वैल्यू कितनी है? इट इज अबाउट 1.6 न्यूटन पर केजी. क्योंकि मून का मास कम है इसलिए उसकी जी की वैल्यू कम है. सिमिलरली सूरज, sun has much most greater mass, so the value of g for the sun is much highest. Okay, इसी तरीके से डिफरेंट पोजीशन पे भी जी की वैल्यू डिफरेंट होगी. सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं वेट को. व्हाट इज वेट? वेट बहुत आसान, बहुत इजी डेफिनेशन वेट की क्या है? इट इज पुल ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज वेट? इट इज पुल ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है दैट इज पुल ऑफ ग्रेविटी. वेट का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है? W इक्वल mg. वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसमें W क्या है? वेट है. m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, एंड g क्या है? ग्रेविटेशनल field strength. Okay, now we will discuss the differences between mass and weight. So number first, mass remains same everywhere. But on the other hand, weight changes place to place. And why this is so? Because we know the formula of the weight is W equal to mg, and since the value of g is different at different places, so the weight also changes. Okay, it will change even on the earth at different places, and it will change on different planets, but mass remains same throughout the universe. Number second, mass is scalar quantity. It required no direction, while weight is vector quantity, because weight has a certain direction. Number 3, mass can be measured by an electronic balance, or by
physical balance or beam balance. While if you have to measure the weight, you got to have a spring balance. Or spring balance is also known as Newton meter. And the fourth difference, that mass has a unit kilogram, while weight has a unit Newton. So these are the differences between the mass and weight. Let's continue with, now the next topic what we are going to discuss is density. What is density? We define density as it is the mass present in a unit volume. Mass present in a unit volume. How much mass in a unit volume? Say like in 1 meter cube, how much mass is there? That will be the density. The formula for the density is mass over volume and remember it is scalar because it has no direction. It is scalar quantity and its SI unit is kilogram per cubic meter. Kg is unit of mass and cubic meter is unit of volume. Now how to find the density of a certain object? Well, if you are in lab and you have been asked to find the density of a block, what you supposed to do, let's suppose that I have this block. This is the block. Okay, let's do it in this way if it is not happening. Okay, this is a block or a cuboid. And you've been asked to find the density of this block. We know that the formula for the density is density equal to mass over volume. So first of all we have to measure the mass. So first step should be measure mass by electronic balance. So you measure the mass, and this should be, remember when a question comes, must mention the instrument for what you are going to measure something. Must name the instrument. Now we have to measure the volume. To measure the volume, what we are going to do, we know that the volume is equal to length into width into height. So we will take a measuring scale. We will measure the length and width and height. Okay, so next step should be by using, must name the instrument.
meter rule, measure length, width and height, and then by using the formula volume equal to length time width time height, you can measure the volume. Now since you measured the volume, the last step should be, now you have the mass and you have the volume. Now by using the formula density is equal to mass over volume, you can measure the density. Must mention the formula for the final calculation. So this is how you can measure the density of a regular shape. What are regular shapes? All those shapes which are easy to measure. You can measure by measuring scale or meter rule or in easy way. Now there are some objects are there which whose size may not be measured as easily as this block. So we call them those objects irregular object. Now how to find the volume of irregular object? So to find the volume, and density of irregular object, what you supposed to do? Number one, let's suppose that we have this small rock, which is surely an uneven object. The first step should be, if you want to find the density, the first step should be measure mass by using electronic balance or physical balance or beam balance, whatever is available. Number second, to measure volume, use measuring cylinder. Okay, to find the volume of irregular shape like a rock, like a stone or any other irregular object, a common method is to use of a measuring cylinder. Now how it helps you to find the volume? Okay, here I'm going to draw a measuring cylinder for you. Okay, this is a measuring cylinder. This is the base. And we know that any measuring cylinder has some divisions that give you the values in milliliter or cubic centimeter. Remember that 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter. Both are equal, same. Okay, so these are the division. Let's say if they are in milliliter or either in centimeter cube. First thing, you have to make sure that your measuring cylinder is perfectly vertical, because if the cylinder is tilted, it may not give you an accurate value or accurate reading, and this can be done by using a set square. So
I will be placing a set square over there. So I place a set square over there just to make sure that the cylinder is perfectly vertical. Now, pour the water inside. Make sure when you are pouring the water that you should pour the water slowly, and the water must go along with the walls, touching the wall, this way, this way, this way. Why? Because if you pour the water directly, when water hit the bottom, it will splash and the air bubble will produce. And once you have the air bubble inside, it means that the in volume of the stone there will be a mixing of volume of air, and that will give you a reading that may contain some error. Okay, measure the first volume. And how to measure the volume? Remember that your eye level must be here at the bottom, because when you pour the water surface is not always straight. In narrow cylinder, water will be a little curved. Its middle part of the water will go a little down. This will call lower meniscus. So take the reading of the water from lower meniscus. This is. Place your eye right at the level here. This is to avoid any parallax error. This should be your eye. Let me write the eye. So take the first reading of the volume. Let me call it V1. V1 is the volume of water only. Now, when you place the object, this rock inside, precaution says that when you lower the rock, must make fast the rock with a piece of thread, a piece of string. This has multiple reasons. Number first reason, that the water should not splash and air bubble not produce. It is also provide you a safety, because the stone may damage the cylinder. Okay, when you put the rock inside the cylinder, the water level will rise. Let's suppose that this is the new water level. Again, you will take the reading from the lower meniscus, and this reading will be called volume 2. Okay, make sure your eye level must be at the right level of the reading to avoid any parallax error. If you take the reading from above, let's say this position, or below, let's say this position, this will not give you the correct reading, and your reading may have some error, and this error will be the parallax error. So this is the rock what you have placed. Now, how to find the volume of stone or volume of rock? Volume of a stone, V, is equal to final reading of the volume V2 minus first reading of volume V1. So this is how you can get the volume. Volume of V is volume of rock or whatever object you have used to find the density. Now remember, I'm repeating that the measuring of the mass must be first, because this time the stone will be dry. If you measure the volume first, you have to put the stone inside the water, and this will make the stone wet. It means that when you measure the mass of a wet stone along with the mass of the stone, you will measure the volume of water as well, and this will again brings an error. So measure the mass when the stone is perfectly dry, and that is why you should measure the mass first, because at this time stone is dry. Okay, now you have the volume here, and you have the mass. You already measured the mass first. Okay, now simple way, by using the formula, density is equal to mass over volume. You can measure the density of irregular object. So this is the process to find the density of an irregular object. This experiment has some limitation. And what are those limitations? Number first, it cannot measure the
density or the volume of a large object, because for large object you have to have a very large cylinder, which probably not available in a lab. Number two, you cannot measure the volume or density of an object which is dissolvable inside the water, like a chalk may be dissolved or can absorb the water. Okay, a limestone or any floating object like a piece of sponge, a wood, a thermopole, they cannot submerge into the water, they remain floating, so the volume may not be measured. So this experiment has some limitation. So we can measure the volume or density of the object which are not dissolvable into the water, and those objects who are not too big, and those objects which cannot soak the water. So this is a regularly coming question in your syllabus. In the next class, we'll discuss the next chapter. Bye bye.